इस हालात में जितना इत्तफाक़े राय पैदा हो सकता था, मुमकिन था, वो इत्तफाक़े राय हमने हासिल करके 26 आईनी तरमीम की शक्ल में आज हम इंशाअल्लाह ताला नेशनल असेंबली से पास करने जा रहे हैं। यह साबित होगा कि जैसे 18वीं तरमीम ने हमारे पार्लिमान के लिहाज से, वफाक के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, डेवोल्यूशन के लिहाज से इनकलाबी रिफॉर्म्स थे, वो इंशाअल्लाह ताला तारीख साबित कर देगा कि जो काम हम आज करने जा रहे हैं ये भी तारीखी काम है। ये जस्टिस पटेल साहब ने अपना एक्सपीरियंस से जो सीखा उसके नतीजे में ये तजवीज दी कि पाकिस्तान में एक आईनी अदालत होना चाहिए जहां तमाम सूबों का बराबरी की नुमाइंदगी हो। 2022 में लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग एक मैंने किया, एक जस्टिस फायज ईसा साहब ने किया। उसी कॉन्फ्रेंस में आईनी अदालत की हमायत किया। और क्यों हमायत की? ताकि पाकिस्तान का अथॉरिटेरियन अदालत का वाहिद हल उस सिविल सोसाइटी का बैठक ने यह समझा कि आईनी वफाकी अदालत है। और अगर उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा, रज़ा रबानी साहब ने कहा कि अगर आईनी अदालत नहीं तो कम से कम हमें आईनी बेंच दे दे। I think what one needs to do is to look at the Constitution itself. Because the Constitution itself of 1973 provides for a number of solutions to various issues that arise between the federal government and the provinces, between the provinces and the federal government. And one would then be questioning the fact that if one was to look at the Constitution and one was to follow the Constitution, would litigation in that stricto sensu terms really be necessary? Generally what we say after the lawyers movement, which was for the independence of judiciary, कि अदलिया अब मादर पिदर आज़ाद हो गई है. They don't have any limit of the jurisdiction. Their decisions are based on much more on likes and dislikes. There is no regulatory provisions how to deal with the suo motu cases, how to regulate urgent matters and old matters and regular matters. Their conduct has become so authoritative that even if a lawyer comes before the rostrum, they announce their decision, dismiss. So briefly, if we think about Article 25, which is the right of equality and a right against discrimination, it's yet not very clear, what the tests are vis-a-vis the according of equality rights, what counts as discrimination that will be barred, when affirmative action can kick in. I think there's some developments happening, but again, the primary feature in those judgments has tended to be, and not just Article 25, but in the interpretation of all of our fundamental rights, is a great deal of deference to the government of the time or national security concerns. All of us know there are huge in our constitution and in the constitutional structure, and I wish that this had, perhaps had greater play at the time that the 18th Amendment certainly was being authored, is the need for such wide clawbacks to our fundamental rights. ये सियासत की फतह है, ये जमहूरियत की फतह है, ये सियासी जमातों का फतह है
اور ہمارے بھائی وہ دے یا نہ دے یہ ان کا بھی سیاسی کامیابی ہے. آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net